अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनमोल आसिफ कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी गोना डिस्कस अनदर लिटरेरी पीरियड नेम्ड द न्यू क्लासिकल पीरियड. The neoclassical period started in 1660 and ended in 1785 or 1798. Neoclassical period 1660 में स्टार्ट होता है और एंड होता है 1785 या फिर 1798 में. कुछ बुक्स में 1785 मेंशन्ड है और कुछ बुक्स में 1798. In today's lesson, while discussing the new classical period, we will discuss some of the ages. Restoration age or age of Dryden, Augustine age or age of Pope, age of sensibility or age of Johnson. So let's start. Firstly, let's understand the word neoclassical. The term neo means new. Classical as in the day of Roman and Greek classics. जो टर्म है न्यू, जिसका मकसद है न्यू, नया, और क्लासिकल बेसिकली रोमन्स और ग्रीक्स को रिप्रेजेंट करता है. द न्यू क्लासिकल पीरियड वॉज ऑल्सो कॉल्ड एरा ऑफ इनलाइटमेंट, एज ऑफ रीजन और एरा ऑफ लॉजिक, विच एम्फसाइज्ड लॉजिक एंड रीजन. न्यू क्लासिकल पीरियड को एज ऑफ रीज़न या फिर एरा ऑफ लॉजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक और रीज़न पे एम्फसाइज किया जाता था, उस पर फोकस किया जाता था. द न्यू क्लासिकल पीरियड, इट वॉज प्रेसिडेड बाय द रिनाइसेंस पीरियड एंड फॉलोड बाय रोमांटिक एरा. न्यू क्लासिकल पीरियड से पहले रिनाइसेंस पीरियड चल रहा था और न्यू क्लासिकल पीरियड जैसे ही एंड होता है उसके बाद रोमांटिक एरा स्टार्ट हो जाता है. The new classical period ended when Wordsworth published the romantic lyrical ballads. New classical period तब end होता है जब वर्ड्सवर्थ ने romantic ballads को publish करवाया. The new classical period is also known as classical age. अब न्यू क्लासिकल पीरियड को क्लासिकल एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रोमन्स और ग्रीक को फॉलो किया. The new classical period is marked by the rise of deism. Deism कहा जाता है एक belief को, belief in the existence of supreme power or supreme being. And it was marked by intellectual backlash against earlier Puritanism and Americans' revolution against England. New classical era. This was a time of comfortableness in England. People would meet at coffee houses to chat about politics, among other topics, and sometimes drink a new warm beverage made of chocolate. It was also the beginning of British tradition of drinking afternoon tea. And it was the starting point of the middle class, and because of that, more people were literate. न्यू क्लासिकल एरा में इंग्लैंड अपने कंफर्ट जोन में था. लोग कॉफ़ी हाउसेस में बैठ के एक दूसरे से पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते थे और कई तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता था. और उस वक्त में एक ब्रिटिश ट्रेडिशन था चाय पीने का, वो स्टार्ट हो गया था. और ये वो वक्त था जब मिडिल क्लास स्टार्ट हुई और इसी वजह से लोग वहाँ के एजुकेट होना शुरू हो गए थे. ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल एरा पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन अपीयरेंसेस बट नॉट नेसेसरली इन बीइंग जेन्युइन. Men and women commonly wore wigs and being clever and witty was in vogue. Having good manners and doing the right things, particularly in public, was essential. It was a time too of British political upheaval, as 8 monarchs took the throne. न्यू क्लासिकल एरा के दौरान लोग अपनी अपीयरेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे. उनको जेन्युइनिटी से कोई लेना देना नहीं था. उनका एक ही मकसद था कि वो अच्छे दिखें. तो वहाँ के मर्द और औरतें विग्स पहना करते थे. वो काफ़ी क्लेवर और विटी थे. वहाँ के लोग पब्लिक इमेज को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे. उनको ये होता था कि हम अच्छे मैनर्स के साथ हों और सही चीज़ें करें. और ये वो वक्त था जब ब्रिटिश पॉलिटिक्स में काफ़ी हलचल चल रही थी और 8 मोनार्क्स ने थ्रोन को टेक ओवर किया था. न्यू क्लासिकल लिटरेचर. लिटरेचर ऑफ द एज इज़ कंसर्न विद नेचर, ह्यूमन नेचर, सुपरमेसी ऑफ रीज़न, unity in the works of all writers. New classical literature is characterized by order, accuracy and structure. न्यू क्लासिकल लिटरेचर को अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी फोकस नेचर, ह्यूमन नेचर और रीजनिंग लॉजिक पे हुआ करता था. उनके वर्क्स में एक यूनिटी का एलिमेंट पाया जाता था.
न्यू क्लासिकल लिटरेचर में ऑर्डर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता था. सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूडेड parody, essays, satire, letters, fables, melodrama, and rhyming with couplets. Division of New Classical Period. New Classical period of literature can be divided into three distinct stages. न्यू क्लासिकल पीरियड को हम लोग स्टडी करने के लिए तीन डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, रिस्टोरेशन एज, दैट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्राइडन. नंबर टू, Augustine age, that is also known as age of pop. Number 3, age of sensibility, that is also called age of Johnson. Let's discuss them one by one. Firstly, we have restoration age, that is also known as age of Dryden. It started in 1660 and ended in 1700. It is called the restoration period as King Charles was restored in this era. इस टाइम पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि किंग चार्ल्स दोबारा से वापस आ गए थे, अपने थ्रोन को उन्होंने हासिल किया था. दिस पीरियड मार्क्स द ब्रिटिश किंग्स रिस्टोरेशन टू द थ्रोन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्यूरिटन डोमिनेशन इन द इंग्लैंड. प्यूरिटन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो गया था इंग्लैंड में, तो काफ़ी अरसे बाद किंग चार्ल्स ने वापस अपना थ्रोन लिया और हासिल किया. इस वजह से इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है. Its symptoms include the dominance of French and classical influence on poetry and drama. Restoration literature continued to appeal to heroic ideals of love and honor, particularly on stage in a heroic tragedy. Now let's look upon some literary figures of Restoration age or age of Dryden. John Dryden, Sir William Temple, Samuel Pepys, Jean Baptist, John Milton, John Locke, Ephra Behn, Jean Racine. Among these, John Dryden was one of the most dominant literary figure. Now let's look upon some famous literary works. All for Love by John Dryden, A Prologue by John Dryden, and Epilogue by John Dryden. Moving towards Augustine age, that is also known as Age of Pop. It started in 1700 and ended in 1750. The Augustine age is also called Age of Pop because Pop was a leading poet in this age. Augustine age को Age of Pop इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान पॉप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे और वो एक पोएट रह चुके हैं. It is called the Augustine age because King George I wanted people to think he was like Augustus Caesar. This period is marked by imitation of Virgil and Horace's literature in English letters. Augustine age इसलिए कहा जाता है क्योंकि किंग जॉर्ज चाहते थे कि लोग उनको ऑगस्टस की तरह कंसीडर करें और इस पीरियड के दौरान वर्जिल और हॉरेस के लिटरेरी वर्क्स को इमिटेट किया जाता था. Now let's look upon some literary figures of Augustine age or age of pop. Alexander Pope, Francois Mary, Joseph Addison, Jonathan Swift, Erod de Voltaire. Here are few famous literary works. Gulliver's Travel by Jonathan Swift, Rape of the Lock by Alexander Pope. Now let's discuss Age of Sensibility, that is also known as Age of Johnson. It started in 1750 and ended in 1798. It lasted up to 1798 when the Romantic movement was underway with the publications of lyrical ballads by Wordsworth and Samuel Coleridge. एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, जो कि 1750 में स्टार्ट होती है और 1798 में एंड होती है. 1798 में तब जाके एंड होती है जब रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है. वर्ड्सवर्थ और सैमुअल कॉलरिज ने कुछ पब्लिकेशंस करवाई थी लिरिकल बैलेड्स की, जिसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड हो जाती है. This period marks the transition towards the upcoming Romanticism. Through the period is still largely neoclassicism. Much was happening around the world politically, such as both the American and French revolutions. This time marked a transition in English literature from the structure and formality of neoclassical writers to the emotional, ungoverned writings of the Romantics. Age of Sensibility या फिर Age of Johnson neoclassical period का वो एज है जब ऐसा से करके रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई.
और वहाँ के राइटर्स ने कुछ नई टेक्निक्स यूज़ करना शुरू कर दी थी और उनकी राइटिंग ज़्यादातर इमोशंस पर हुआ करती थी। और ये वो टाइम पीरियड था जब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी चल रही थी, तब अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था। Now here are some literary figures of Age of Sensibility or Age of Johnson. Samuel Johnson, George Crabbe, William Cowper, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Edward Gibbon, Robert Burns, Thomas Gray, Thomas Jefferson. Now let's discuss some famous literary works. Lives of Poets by Samuel Johnson. The Decline and the Fall of Roman Empire by Edward Gibbon. Country Churchyard, an Elegy by Thomas Gray. So, this is all about the new classical period in which we discussed Restoration Age or Age of Dryden, Augustine Age or Age of Pope, Age of Sensibility or Age of Johnson, in which we also discussed some of the literary figures along with some literary works. So, that's all about the today's lesson. If you really learned something, like, comment, share, and subscribe. Thank you.